everyone, welcome to Irish Expert. Your dream abroad is about to take off. In this video, I'll talk everything about UK visitor visa. I have had so many queries on this specific topic. क्या-क्या requirements है और आपको क्या-क्या document चाहिए होते हैं इस visitor visa पर, आप कितने टाइम के लिए वहाँ रह सकते हैं और सबसे important कि आप tourist visa पर काम कर सकते हैं या नहीं. Let's start with the most important thing कि अब आप UK visitor visa पर काम कर सकते हैं या नहीं. So there is a big update. 31st January 2024 से UK गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ही चेंज वीजा रेगुलेशंस में इम्प्लीमेंट किया है कि अब आप टूरिस्ट वीजा पर भी काम कर सकते हैं. You can now work on tourist visa in UK. Changes allow tourist visa holders to participate in certain work-related activities. For example, आपकी कोई business meetings है clients के साथ या फिर आपका कोई remote work है. But it should not be a primary reason to visit the UK. There are some important points that you need to know about these revised rules. First, employees of companies with both the branches in UK and internationally being allowed to engage in limited client work. Second, visitors can now work remotely in the UK as long as it's not their primary purpose for being there. Third, scientists, researchers and academics being permitted to conduct research in the UK, but there are some exceptions. And the last, lawyers will be allowed to engage in additional activities such as providing advice, acting as an expert witness, teaching and participating in legal proceedings. बात करते हैं eligibility requirements की. First, travel document. ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जनरली ट्रैवल डॉक्यूमेंट हमारा पासपोर्ट ही होता है. सो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट फर्स्ट, उसके बाद ही आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सेकंड, प्रूफ ऑफ रिटर्न. उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट यू विल रिटर्न. यू हैव टू शो कि आप अपने होम कंट्री में वापस आ जाएंगे एट द एंड ऑफ योर विजिट. फॉर एग्जाम्पल, आपको दिखाना होगा कि आपकी होम कंट्री में या तो आपका कोई बिजनेस चल रहा है, यू हैव अ रनिंग बिजनेस इन योर होम कंट्री, या फिर आप वहाँ पर कोई जॉब करते हो, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टीज है अपनी होम कंट्री में, या फिर यू हैव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल टाइज इन योर होम कंट्री और फैमिली टाइज. आपके कोई सिबलिंग्स है या आपकी फैमिली है जिनका आपको ध्यान रखना है, पर ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही प्रूफ करना पड़ेगा. थर्ड, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. फिर आते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई स्पॉन्सर है या फिर अगर आपका कोई रिलेटिव वहां पर ऑलरेडी रहता है जिनसे आप मिलने जा रहे हैं और वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, तो उन्हें एक स्पॉन्सरशिप फॉर्म दिया जाएगा जिन्हें उन्हें फिल करना पड़ेगा टू प्रूव दैट दे आर केपेबल टू सपोर्ट यू. इसके अलावा भी आपको अपने ही बैंक में एक मिनिमम अमाउंट दिखाना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए कि आप खुद को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द मोस्ट कंसर्न वर्ड. मैंने ऐसी बहुत सी क्यूरी सुनी है कि हम विजिटर वीजा पर क्या क्या कर सकते हैं और क्या हम अपने विजिटर वीजा को किसी और टाइप के वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, फॉर एग्जांपल वर्क वीजा. So to clarify all your doubts, the next point is very crucial and important for you. Watch the video till the end. Let's start with what you can do on a visitor visa. You can visit the UK as a standard visitor. First, for tourism. अगर आपको कोई हॉलिडे पर जाना है या अगर आपको कोई वेकेशन प्लान करनी है अपने दोस्तों के साथ, जस्ट लाइक ऋतिक रोशन डिड इन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उस एक ट्रिप ने उसकी पूरी लाइफ बदल के रख दी थी. क्या पता आपकी भी लाइफ चेंज हो जाए. सेकेंड, टू सी योर फैमिली और फ्रेंड्स. अगर आपकी कोई फैमिली और फ्रेंड जो कि वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं किसी भी वीजा पर या फिर PR पर, तो आप उनसे वहाँ पर मिलने जा सकते हैं ऑन अ विजिटर वीजा. थर्ड, टू वॉलंटियर फॉर अप टू 30 days विद अ रजिस्टर्ड चैरिटी. अगर आप चैरिटी के लिए थोड़ा बहुत काम करना चाहते हो या वॉलंटियर करना चाहते हो तो आप 30 दिन तक वहाँ पर कर सकते हैं. टू पास थ्रू UK टू अनदर कंट्री for certain business-related activities such as attending meetings and interviews, to take part in school exchange program, to do a recreational course for up to 30 days, for example, a dance course, as an academic, senior doctor or dentist, or for medical reasons. Now let's come to what you cannot do on a visitor visa in the UK. First, you cannot claim public funds. आप वहाँ पर जितने भी पब्लिक बेनिफिट्स हैं उनका फायदा नहीं उठा सकते. सेकेंड, यू कैन नॉट लिव इन UK फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थ्रू सब्सिक्वेंट और फ्रीक्वेंट विजिट्स, क्योंकि आप UK विजिटर वीजा पर एक टाइम पर मैक्सिमम 6 महीने तक ही रह सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन यहाँ पर 6 months होती है फॉर द UK विजिटर वीजा. एंड द लास्ट, you cannot marry or register your civil partnership or you cannot give a notice of your marriage or civil partnership, क्योंकि आपको उसके लिए मैरिज विजिटर वीजा के लिए पहले अप्लाई करना पड़ेगा. विजिटर वीजा पे you cannot register your marriage or civil partnership. Now what if आपको लंबे टाइम के लिए UK में रहना है? Here the long-term standard visitor visa comes in the picture. You can choose to apply for the long-term standard visitor visa if you visit the UK regularly, and this visa lasts 2, 5 or 10 years. पर एक टाइम पर सिर्फ आप 6 महीने के लिए वीजा पर रह सकते हैं. If you are under 18 years old when you apply for the visa, the long-term standard visitor visa will only be valid for up to 6 months after you turn 18. Also, the fee is not refundable.
You may be given a shorter visa than requested if UK Visas and Immigration believes that you cannot meet the eligible requirements for the duration of the visa that you applied for. One more thing, आपको अपनी application fee का refund नहीं मिलेगा अगर आपको shorter visa मिला है या फिर आपकी application ही refuse हो गई है. Also, your visa may be cancelled अगर आपकी travel history में ये दिखाया गया है that you are repeatedly living in the UK for extended periods. You will need to provide these information in your online application form. First, the dates you are planning to travel in the UK, where you will be staying during your visit, your parents' name, address and your passport number, your current home address and how long you have lived there, details of any kind of criminal, civil or immigration offences that you may have committed, how much you earn in a year or your annual income, how much you think your trip will cost you, details of your travel history for the past 10 years, your employer's details or their telephone number, the name and address of anyone who is paying for you in this trip, also the name, address and passport number of the family members if they are living in the UK. And the last, a certificate proving that you have had a tuberculosis test if you are visiting for more than 6 months in the UK. If you need to change something in your application after you have sent it, then you can contact UK Visas and Immigration. You can ask to cancel your application. Also, आपको आपकी फीस भी रिफंड मिल जाएगी अगर आपकी एप्लीकेशन अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो. So that was it guys. अगर आपको भी चाहिए UK विजिटर वीजा, आ जाओ, दिला देंगे. Share this video with your family and friends who might be interested in learning about UK visitor visa. For more detailed information, you can visit our website Irish Expert. Link has been given in the description below. Till then, stay connected to Irish Expert.